Hello students, welcome to my channel. Myself Sushila Tulsiani. I am going to explain you chapter 2 Microorganisms Friend and Foe Part 2. In the previous video I will explain you about the different types of the microorganisms and how microorganisms are friends for us. Now, let me explain you about the antibiotics. So, the question is, what are the antibiotics? What are their uses? Antibiotics are the medicines that can kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. For example, penicillin. Antibiotics are used to cure a variety of diseases such as the streptomycin, erythromycin, tetracycline that are made from the bacteria and the fungi. They cure the microbial infections in animals by mixing the antibiotics with the feed or of the livestock or the poultry and control the several प्लांट डिसीज मीन्स एंटीबायोटिक्स वो है जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, वो प्लांट में और एनिमल्स में भी यूज होती है. What precautions should be followed while taking antibiotics and why? Antibiotics should be taken only on the advice of the doctor and one must complete the course of the doctor prescribes. डॉक्टर ने हमें जब भी कोई माइक्रोबियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका कोर्स हमें कंपलसरी कंप्लीट करना ही है. Antibiotics taken in the wrong doses may make the body resistant to the drug and it may not be effective in the future. Moreover, antibiotics may also kill the beneficial bacteria in the body. मीन्स एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग रॉन्ग डोजेस में या हायर डोजेस में यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हमारी बॉडी उसके आगे रेजिस्टेंस हो जाएंगी, तो जो मोर पावरफुल बैक्टीरिया के आगे वो यूज़ नहीं हो सकती. एंड एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, द बैक्टीरिया विच आर गुड फॉर आवर बॉडी, उसको भी किल कर देता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वैक्सीन्स. Before learning the vaccine, let me explain you about some keywords that is used in the theory of the vaccines. First, the pathogens. The disease-causing microbes are called the pathogens. जो microbes हमारी बॉडी में disease cause करते हैं उसको pathogens कहते हैं. Antibodies. Antibodies are the substance our body produce or to fight disease-causing microbes. एंटीबॉडीज वो है जो हमारी बॉडी में जब कोई माइक्रोब्स एंटर होता है तो हमारी बॉडी, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन माइक्रोब्स या एनीथिंग एंटर्स होता है तो हमारी बॉडी के डब्ल्यूबीसी होते हैं एंटीबॉडी के जैसे रिएक्ट करते. दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. Now the vaccine. Vaccines are the weakened or the dead disease-causing microbes that are injected in the body to trigger the production of the antibody. Means वैक्सीन वो है जिसमें weakened means बहुत ही कम मात्रा में या तो diluted और the dead disease-causing microbes को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी ये एंटीजन अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होना शुरू हो जाता है एंड दिस एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग टाइम टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द एनी अटैक ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. मीन्स हमारी बॉडी में एक सोल्जर की सेना ही आर्मी खड़ी हो जाती है जो भविष्य में इन फ्यूचर वेन एवर एनी एंटीजन कम्स इन आवर बॉडी it reacts with it and kills that microbes. Now the vaccination is the process of protecting the body from the pathogens with the help of the vaccine is called the vaccination. हमारी बॉडी को ऐसे पैथोजेंस को लिए तैयार करने के लिए जो वैक्सीन यूज होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सीनेशन. नेम सम ऑफ द डिसीज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन. ये सब वैक्सीन हम लोगों ने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारी लेके रखी है. सम ऑफ द डिसीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशंस आर द कोलेरा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स एंड द TB means tuberculosis. One can get necessary vaccines from the nearby hospitals. How do the microbes clean up the environment? Microbes or the microorganism
decompose organic waste and the dead remains of the plants and animals and convert them into the simpler substance, which can again be used by the other plants and the animal by the process of the biodegradation. Thus, they help us in getting rid of the harmful and smelly substance and clean up the environment. Means जो भी आसपास के एटमोसफियर में हार्मफुल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको ये डिकम्पोज कर देता है और उसको इजीली सॉल्यूबल जो इजीली पेनिट्रेट इन द सॉइल के अंदर जाता है वैसे में वो छोटे टुकड़े कर देता है और ऐसे वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो था माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर यूजफुल फॉर अस. नाउ लेट वी स्टडी अबाउट द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. सम डेफिनेशंस जो हमें रिमेंबर करनी है. दैट आर द communicable disease. Communicable diseases are the microbial disease that is caused by the microbes that spread from the one infected person to a healthy person through air, water, food, or the physical contact, such as the cholera, chickenpox, common cold, and tuberculosis. That carriers, insects and the animals that carry disease-causing microbes and transfer them from one place to another are called the carriers or the vectors, such as the house flies and the mosquitoes. Means there are the two types of the diseases, that is the communicable and non-communicable. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता, वो एयर वाटर से नहीं स्प्रेड होता, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, डायबिटीज, दैट आर द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. एंड सेकंड वन इज द कम्युनिकेबल डिसीजेस जो एयर वाटर फूड के कांटेक्ट में आने से वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है. और जो ये कैरियर्स को इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स जो इस डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ट्रांसफर करते उसको कहा जाता है कैरियर्स. हियर आई एम शोइंग द डायग्राम हाउ डू द बटर हाउस फ्लाइज ट्रांसफर द पैथोजेंस. You can see here is the garbage bin, right? Here flies sits and see they feast on the nasty things like the feces and the rotten meat, right? A housefly may sit on the garbage and animal excreta and the pathogens stick to the body. When they sit on the uncovered food, these pathogens get transferred to the food. When someone eats this contaminated food, he or she may fall sick. That's why we should always cover our food. मतलब कि जब भी ये हाउस फ्लाई कोई भी गंदी चीज़ पे बैठती है और वापस हमारे अच्छे क्लीन फूड पे बैठती है तो जो बैक्टीरिया या जो पैथोजेंस है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं. इसलिए हमें हमारे घर में हमेशा फूड को नीट एंड क्लीन प्लेस पे रखना चाहिए और कवर करके रखना चाहिए. नाउ द नेम, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेम्स ऑफ द कैरियर्स. हियर यू आर watching the malaria disease, that is the female and anopheles mosquito that carries, here is the female anopheles mosquito that carries the parasites of the malaria called the plasmodium. Then another one is the dengue, white dotted, right? This is the female Aedes mosquito that carries the dengue virus called the flavivirus. Now common disease and the modes of the transmission. जो कॉमन डिसीज हमारे आसपास हमें होते हैं और उसका मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन कैसे होता है. And how to prevent disease that spread to the air or the contact. Here are the common disease. First one is the mode of the transmission is the air. From air, the tuberculosis, measles, chickenpox, and the polio disease is spread. By the water, cholera, typhoid, polio, and hepatitis A. Means most of this disease occurs in the monsoon season because of the stagnant or the dirty water. Then through the food, the cholera disease spread through the contact
from one person to another person, that the chicken pox disease spread, and through the mosquito, that we all know the malaria disease is spread very easily. Now, how can we prevent the disease that spread through the air or the contact? To prevent the disease that spread through the air, we should keep the patients in the complete isolation and keep his or her personal belongings away from the others. Vaccination at the suitable age can prevent the onset of the tuberculosis, chickenpox, polio, and the measles. Then the second question is how we can prevent the disease that spread through the water or the food. To prevent the disease that is spread of the polio, cholera, typhoid, hepatitis A, vaccination is the effective. One should also maintain the personal hygiene and good sanitary habits and drink boiled drinking water. हमें हमेशा मानसून की सीजन में पानी बॉयल करके पीना चाहिए. One should also eat properly cooked food to avoid the disease like the cholera. हमें हमेशा कुक फूड खाना चाहिए. How to prevent disease that spread through the mosquitoes? We can stop the spreading of the disease caused by the mosquitoes such as the malaria and dengue by not allowing these mosquitoes to breed. We should keep our surroundings clean and dry and not let water collect anywhere in coolers, tires, and that flower pots, etc. We should also spray insecticides and use mosquito repellent and mosquito nets to protect ourselves from the mosquito bites. Here are some common diseases and the microorganisms that cause them to the bacteria, that is the tuberculosis, cholera, and typhoid, through the virus, that is the measles, chickenpox, and the polio occur, and hepatitis A, through the protozoa, malaria disease occurs. Now, that is disease caused by the microorganisms in the animals. Anthrax is a dangerous disease that affects the human and the cattle. Is caused by the bacterium called the Bacillus anthracis. मीन्स ये डिसीज एंथ्रेक्स जो होता है वो डेंजर डिसीज है और वो ह्यूमन और कैटल्स में भी होता है और किससे स्प्रेड होता है? दैट इज स्प्रेड बाय द बैसिलस एंथ्रासिस. The foot and the mouth disease in the cattle. It is caused by the virus called the foot and the mouth disease virus, FMDV, or the Picoma virus. Then the disease that is caused by the microorganisms in the plant. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग को ही डिसीज होते हैं पैथोजन से. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो सफर ड्यू टू द pathogens. Microorganisms can cause disease in plants and reduce the crop yield. Some of the plants in which they cause disease are this is the wheat. In the wheat plant disease, this is the rice. You can see here clearly. This is the disease that occur in the potato. Then apple, orange, and the sugar cane. The plant can be protected by using the chemical and kill these microbes. Common disease in plant caused by the microbes. That is the citrus canker is caused by the bacteria and spread through the air. Rust of the wheat is caused by the fungi and spread through the air or the seeds. Yellow vein mosaic or the okra is caused by the virus and spread through the insects. So students, this is about my video. Now next will be, I will explain you in the next part. Thank you for watching this video. Have a nice day.